हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज के जो हम टॉपिक कवर करेंगे, हम एरिस्टोटल के बारे में बात करेंगे। अब जो अनलिमिटेड जो अनअकैडमी का यूपीएससी सीएसई सब्सक्रिप्शन है, वो बहुत लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए, उसके बाद जो ये प्राइस है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो अगर आपको ये सब्सक्रिप्शन चाहिए अभी, तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। इस पर आपको सिंपली ये कोड अप्लाई करना है। Unacademy Aspire is providing you with the All India free mock test for Civil Services Aspirant under UPSC CSE Prelims of 2020 of Paper 1 JS, and it will be conducted on every 10th and 25th of every month. And if you will also get exciting prizes and scholarship for all top 50 rank holders. And this was conducted on 10th October at 10 a.m. sharp. UPSC CSE complete batch preparation courses was started from 5th October 2020, and we had 3 complete batch courses. The first one was in bilingual, the second one is in Hindi, and the third one is in English. So the first batch in which the medium of instruction would be in Hindi English both, and you can enroll for in whichever batch you can comfortable in. This one subscription has like unlimited benefits, like you can learn from your home, you have unlimited access to all courses, top educators, full syllabus coverage, double doubt clearing session, live test series, study material will also be provided to you in form of PDF, and we have proper answer writing session also under our mentor and guidance. So this is also proper one-stop solution for your complete UPSC CSE preparation, because we have structured batches with top educators, batches in Hindi, English bilingual, late night as well as 2-year batches, 100% syllabus coverage, vast range of optional, prelims and main test series, daily current affair practice, answer and essay writing practice will also be done, and we'll give you your performance analysis, and along with that we'll prepare you for interview. So this is like a complete package for all your problems. And if you subscribe now, you will get 10% off. You just need to apply this simple code. Unacademy Champions Conclave was started with a power pack session with the toppers of UPSC CSE 2019, and this conclave was a must attend for every UPSC CSE aspirant, and it succeeded in the country's most coveted exam, because it had with the free to attend a conclave for every student, and it was dedicated a day to learn about the preparation journey of 2019 toppers and get their tips and tricks from the ones who actually cracked it. And this was conducted on September 30th on 2020 from 10 to 12 a.m. sharp, and there were 14 toppers, 10 educators, and we had 14 talks and discussion. So T20 daily current affair test series is completely free for every student, and it will be given to you daily at 7:30 for 20 questions for 20 minutes, and it will be for 40 marks along with your test analysis. And in the test analysis, you will also get to know about your percentile. So if you really like our channel, then you can like, subscribe and share, and please join on YouTube, Telegram and Facebook. So let's start. So as we all know that Aristotle made a very distinctive position, and he contributed a lot to a great ideas. So Aristotle was a Greek philosopher or logician and a scientist, as we all know, and he actually catalogued the constitutions into different. He actually tried to catalog different constitutions. That is also like still helps us to understand the constitutions relatively. He described the politics as the practical science because it deals with the citizens should be in making citizens happy, and his philosophy is also like a supreme purpose of life, or the virtue as he puts it. So one of the most important roles of politicians, though, it is to make the laws and constitution with the task that he believed that Aristotle wanted the citizens' well-being and livelihood that should be contemplated before any laws were made. And after the laws were put into place, with the politician's job, it is to make sure that they are abided by every citizen. So Aristotle believes that with the same constitution, the citizens will be able to be the same over the time, and the constitution is like ever change, so will the citizen. So Aristotle was deeply like inclined to the nature of politics, and he was developed and deeply normative, and in the approach of politics he was no more empirical or scientific. He was more empirical and scientific in his technique. So while writing any treatise instead of dialogues, and often handling his material with the considerable detachment. So now let's talk about his books. So the most important text, as we all know, of Aristotle is the Politics.
However, it is important for us to read the Nokim, read about his ethics that is like fully recognized by Aristotle's political project. He strongly believed in the ethics, and politics was strongly related with each other, because ethics and virtuous life is only available to someone who participates in politics, while the moral education plays a very important purpose for the political community. He also said that in his book Ethics, that the end of politics is the best of ends, and the main concern of politics is to provoke a certain character of their citizen and to make them a good and disposed able so that they can perform noble actions. So most people living in the western societies like US, Canada or Germany would disagree with both the parts of his statement. He also highly regarded the politics as aiming at immoral with selfish end and for their own wealth power rather than for the best end for the society, and for thinking for the good and what is actually best for their community. Now let's talk about the theory of state by Aristotle. So as we know that according to Aristotle, by the nature and the necessity, a man is a social animal. So in order to determine the nature of the state, how it varies from other community, Aristotle critically analyzes into the component of parts of the studies for the historical origin. He conferred that there are two basic instincts which are instrumental in bringing people together. The first is a reproductive instinct which actually leads man and women to unite, and the second one is the self-preservation, which actually causes between the master and slave to come together for their mutual benefits. Now out of these two relations, the first one is basically for to increase your family, and the family is an association in which the establish the nature for the supply of men's everyday wants, and the family is like the first stage for the formation of the state. And he discovers that the origin of state is an innate desire for individual to satisfy all his economic and racial needs instincts. So for realization of his desires, the male and female on the one hand and the master and slave on the other hand can come together, live together and form a family like a household which has a moral and social use. So it is therefore the household that consists of three elements that originate, develops, and then it is essential for them to build a proper state. And namingly, he can chip the fellowship and the political organization and justice. So Aristotle also clearly stated that a state is a natural community in which an organism or organism with its all attributes like a living being, he consciously delineates him from the evolution of social institutions from family through the village then to city in a historical sense. Then the state is at natural and the final stage of growth of all the human relations. So family is like the first association of every individual and lowest in the chain of social development and lowest in the rung of values, because it is established by man's nature to supply his everyday wants. So the village is the second type of association according to him, because it's very complex more than family. It is targeting to supply the daily needs of its people. And the third and highest form of the value, the purpose, we can talk about the family and the village that exists for the preservation of life and comforts of their companionship. The state exists for the sake of the good life and not for the sake of life only, because the political societies exist on the basis of their principal action and not on the companionship. So Aristotle thought was a man was basically a good, and he can function of the state was basically to develop its good faculties in a habit of a good action. So Aristotle saw this good deal of identity between the individual of state. Therefore, like individual, the state also shows its virtues of bravery, self-control and justice. So the function of state is basically for the advancement of good life of the citizen, and state was also a spiritual association into a moral life. Now let's talk about the slavery. As we all know, that Aristotle was one of the strong defenders of the institution of slavery, because it has also it has also been criticized by many theorists, because Aristotle rationalized slavery was in support of in the fact and order of the day. And he wrote in the Politics that for some should be ruled and others should be ruled is a thing not just only necessary but very important from hour of their birth, and some are marked out of their subjection from the other for the rule. So Aristotle defended slavery on the basis of expeditions.
While conversing with the origin of state and family, Aristotle commented on this that the institution of slavery is found that slavery is very essential for every household, and he defends that it's natural and therefore moral. So a slave living in the ownership of his master is an instrument of an action also. And a man cannot lead a good life without the slave, or any more he can produce good music without instrument. Like more than he can produce good music without the instrument. So man differ from each other in their physical, intellectual fitness, and Aristotle justified slavery on the grounds of natural inequality between men. So Aristotle presumed that the nature is universally ruled by the contrast of superior and inferior, and man is superior to the animals. Therefore, the male to the female and the soul to the body, reason to passion. So in all division, we can see the superior rules over inferior. And so this advantage should be given of the both. So the men are those whose business is to use the body and who can do nothing better, but they are by nature slaves. So slavery is not only natural, but it is very necessary as well according to Aristotle. So if the masters don't express over the slave, then the slavery is beneficial to both the master and the slave. And slavery is very essential for the master, for the household, because without slaves, he has to do all the manual work with his incapacities to him to do the public duties. Now let's talk about the justification of slavery. As we know, first he said he justifies slavery on the basis of natural, because slavery was considered as a natural phenomena, and the superior would obviously rule on inferior, as just as the soul rules over the body or the reason rules over appetite. So we can also say that people with superior reasoning powers would always rule over the inferior in terms of reasoning, and the masters are stated to be physical and mentally strong than the slaves, so they set up it naturally form the master and later the slave. Second, it is very necessary for them. So slaves are considered as indispensable because they provide a leisure to the most of the essential welfare of the state, and Aristotle stated that the slavery has been benefited the slaves as well, because being a slave he would be able to share the virtues of the master and elevate himself. Now let's talk about the expediency. Aristotle was also had an opinion that the slave was sustained the Greek social economic system because they assisted the Greeks against the social order chaos. He stated that the slavery was a proper social requirement for everyone. So it was balancing the slaves as well as the masters that it aids to in the precise. So Aristotle permitted that the slavery was under such conditions were only to those people who are mentally deficient and virtually not superior should be enslaved. Second, that it asserted that the masters must treat the slave properly, and strongly propagated that the cruel master must be exposed to legal punishments. Third, he supported the liberation only of those slaves whose conduct was good and who had developed their own capacity of reasoning and virtue. And fourth, that the overall development is very essential in the slaveries, but the master has no right to misuse his power. So slaves are only supporters and not their juniors. Let's talk about the citizenship. So as we all know that Aristotle had a very conservative standpoint on his citizenship view also. He explained that state was a collective body of citizens, and citizenship was not determined by the residents, since the resident aliens and slave also shared the common residence by the citizen, but they were not considered as the citizen, and even the women were excluded from this. So he describes the citizen as a person who has a power to take his deliberative and judicial administration of any state, and the representation government was also unfamiliar to Aristotle, because the Greek city state was only directly governed by its citizen. So a citizen has also constitutional rights under the system of public law. So the Aristotle, a citizen who once shared a power and polis, was also dissimilar to the concepts of Plato. He did not distinguish between an active ruling group or a political passive community. Aristotle specified that the young and the old could not be citizens, for the one who was immature and other infirm. So he did not regard the women as citizens because they lacked the deliberative faculty and the leisure to understand the working of politics. So a good citizen should actually have intelligence and ability in order to rule. And Aristotle also stated that कि ये जो होने चाहिए अच्छे citizens है वो actually एक साथ harmony में रह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, और उनको एक सफिशिएंट लेजर भी मिलेगा कि वो डिवोट कर सके अपने टास्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी सिटीजनशिप के लिए. अब एक जो अच्छा सिटीजन है वो पोजेस करता है वर्च्यू, मॉरल गुडनेस है,
और ये हेल्प करेगा रियलाइज करने में उनका सेल्फलेस और कोऑपरेट करेगा सिविक लाइफ के लिए। अब हम आते हैं अकॉर्डिंग टू विलियम, उन्होंने कहा है कि एरिस्टोटल की जो आइडिया ऑफ सिटीजनशिप है वो ये है कि इकोनॉमिकल इंडिपेंडेंट जेंटलमैन है और उनके पास इनफ एक्सपीरियंस, एजुकेशन और लेजर होना कि वो डिवोट कर सके अपने आप को एक एक्टिव सिटीजनशिप के लिए। And for that, citizen must not lead the life of mechanics or the tradesmen, for such life too hostile to the virtue. Therefore, he regarded citizenship as a bondage that forged by the intimacy of the participation in public matter. So they had greater responsibilities, like कि उन्हें citizenship are not just like imposition है, जो एक natural state of human existence, but rather ये entirely सबका एक coordinates है सब नेचर के साथ। और जो सिटीजनशिप है वो नथिंग लेस देन फुलफिलमेंट है अपनी ह्यूमन पोटेंशियल को जो वो देना चाहते हैं गुड लाइफ के लिए। अब इस रिस्पेक्ट में एरिस्टोटल बोलता है पॉलिटिक्स में कि एक सेंस होते हैं सिटीजनशिप जो है वो एक्चुअली एक्टिव पार्टिसिपेशन पे होती है बेस, और जो सिटीजन है वो एक जस्ट इनहैबिटेंट नहीं है स्टेट के, और उनके पास एक सिंपली मेंबर नहीं है कि वो पॉलिटिकली प्रिविलेज क्लास है। तो एरिस्टोटल काफी एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस बनाता है पार्ट्स ऑफ स्टेट में, और ये एक नेसेसरी कंडीशंस है। अब जो एक्टिवली शेयर करते हैं और जिनके मीन्स और लेजर्स है तो वो शेयर करते हैं गवर्नमेंट ऑफ द स्टेट में, और उनके जो कॉम्पिटेंस और वो ज्यादा इंटेग्रल पार्ट होते हैं। अब ये जो सारे वो एक्चुअली काफी नेसेसरी कंडीशन जो वो प्रोवाइड करते हैं मटीरियल एनवायरनमेंट में, जिससे वो एक्टिव सिटीजन्स भी होते हैं और उनको मीनियल टास्क से उन्हें फ्री करा जाता है। अब ये भी डेमोन्स्ट्रेट हमने देखी है स्टडीज में कि एरिस्टोटल के जितने भी आइडियाज है सिटीजन पे वो ब्रॉडली डिफरेंट है जितने भी हमारे मॉडर्न कंसेप्शन है, बिकॉज ये एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है बट एक प्राइमरी गवर्नमेंट है इस व्यू उसके व्यू में। अब जो सिटीजनशिप है वो हम एक कंटेंट नहीं देती है बट फॉर चूजिंग द रूलर्स, बट एक सिटीजन को एक एक्चुअली पावर मिलती है इन टर्न कि वो नॉट ओनली इन सेंस ऑफ बीइंग द मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव but for being very important for helping to making laws for the state. For executive is also designed comparatively the small function of by supplementing the laws when they are inadequate owing to their generality. अब हम देखते हैं जितने भी लॉफ्टी कंसेप्शन है सिटीजन्स के ड्यूटीज में वो भी लाइक क्लोजली नैरोज ऑफ सिटीजन बॉडी है। अब जो रीजन एरिस्टोटल ने एक्सक्लूड करा है वो है मैकेनिक क्लास ऑफ फ्रॉम सिटीजनशिप है। एरिस्टोटल का जो कंसेप्शन है सिटीजनशिप का वो काफी ज्यादा efficient नहीं है आज के point of view से, but he was also like he was unsuccessful to see the prospects of representative government. In the present scenario, we can also see the minimum requirement for the citizenship is the power of voting for the representative of people who are actually ruling in an egalitarianism. Now let's talk about the distributive justice. अब जो एरिस्टोटल है वो बिलीव करता है कि जस्टिस जो है हमारे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में रूटेड है डीपली। इसका मतलब हमारे बिलीव जो आइडियाज ऑफ फेयरनेस है इसका मतलब ये रिफ्लेक्ट करता है। और जो एरिस्टोटल थॉट है वो एक जस्टिस का कोर पार्ट है स्टेट का और ना कि पॉलिटी का जो सस्टेन करता है एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए। और उसने ये भी ओपिनियन बनाया है और ये दिया है कि जो जस्टिस इज लाइक अ कंप्लीट वर्च्यू and the epitome of all the goodness, and it's not the same as virtue because but it is a virtue and virtue in action. So therefore we can also say that Aristotle clearly explained the goodness in the sphere of politics in terms of justice, and justice contain what he promote the common interest. यहाँ पे हमने देखते हैं कि एस्टैब्लिश करता है एरिस्टोटल नोशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड जस्टिस का एथिक्स में, और इसके साइड ऑफ जनरल नोशन क्या है जस्ट। तो जस्टिस के जस्ट के टू मीनिंग्स है। पहला तो ये कि it is mainly used to describe a conduct in agreement with the law, or a conduct or we can see a conduct therefore which conforms to established and authoritative law of human conduct. So therefore it can be a social and moral control, and in the sense that justice basically means a moral disposition which renders the men to apt to do things and which causes them to act justly and to wish what is just. So therefore it is very clearly mentioned that it basically implies with the application and observation of certain authoritative rules of human conduct. So over here the justice signifies equality as a fair mean, and justice in the sense of equality has to do with the external things, and it is considered with the proportional ratio of commensurable goods. Like Aristotle also said that in relation to his moral justice and equality by pointing out that equality is related to the moral justice and they are actually part of a whole. अब जो एरिस्टोटल बिलीव करते हैं कि जस्टिस सेव करता है स्टेट को डिस्ट्रक्शन से
और यहाँ पे जो स्टेट्स है, पॉलिटिकल लाइफ है, वो एक्चुअली प्योर और हेल्दी होनी चाहिए। अब एरिस्टोटल के एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग हम देखते हैं कि जस्टिस जो है वो इधर जनरल और पर्टिकुलर होती है। अब उसने ये भी कहा है कि जनरल जस्टिस होती है वो कंप्लीट गुडनेस से होती है, और ये कंप्लीट क्या फुल सेंस में मतलब है कि जो एक्सरसाइज होती है कंप्लीट गुडनेस का, नॉट ओनली इन हिमसेल्फ बट ऑल्सो लाइक टूवर्ड्स हिज नेचर, और जो पर्टिकुलर जस्टिस होता है वो एक कंप्लीट पार्ट होता है जो जनरल जस्टिस का। उन्हें ये भी मेंशन करा जो स्पेशल काइंड्स ऑफ जस्टिस होते हैं जिन्हें हम करेक्टिव जस्टिस कहते हैं और डिस्ट्रीब्यूटिव। अब जो करेक्टिव जस्टिस होता है उसे एसोसिएट करते हैं वॉलंटरी और जो कमर्शियल हमारे ट्रांजैक्शन होते हैं, जैसे सेल हो गया, हायर हो गया, फर्निशिंग ऑफ सिक्योरिटी और जितने भी बाकी सब है, जैसे अग्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी, लाइफ ऑनर भी है। अब जो डिस्ट्रीब्यूटिव है वो कंसिस्ट करता है प्रॉपर एलोकेशन हम हर पर्सन को देते हैं कि उनका क्या वर्थ है। अब ये जो जस्टिस होता है वो बहुत प्राइमरी है और एक्सक्लूसिवली नहीं है कि उन्हें पॉलिटिकल फ्रीडम मिले। अब जो कंसेप्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस डेमोन्स्ट्रेट करता है कि एक टाइप जो होते हैं पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में उनके खुद के स्टैंडर्ड्स ऑफ वर्थ होते हैं एंड देयरफॉर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। अब जो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस है वो एक ऑनर के लिए, पॉलिटिकल ऑफिस और मनी के लिए भी कॉल होता है, और ये अकॉर्डिंग टू उन्हें मेरिट के बेसिस पे मिलता है। सो डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस जो है वो हम एलोकेट करते हैं कि एवरी मैन इन हिज ड्यू एंड अकॉर्डिंग टू हिज contribution towards his society. So distribution justice is therefore like recognizable with the proportionate equality also. So this was the idea of distributive justice does not apply in the modern times conditions also, because this was based on the notion of award of officers and orders in proportion to the contribution of the men in a society. Now let's talk about the education. As we all know that Aristotle also played a very important role in talking about education like Plato did. So the education must be modified to the constitution of state and should be designed to train the man in a certain type of character that are actually suitable for the state. अब इसके अकॉर्डिंग ये था कि जो बिल्डिंग ऑफ पर्टिकुलर टाइप ऑफ कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ इम्पॉर्टेंट है कि उससे ज्यादा भी जिसका मतलब है कि हम इम्पार्ट करना ऑफ एजुकेशन से। अब जो देयरफॉर हम देखते हैं प्रॉपर एजुकेशन अथॉरिटीज होती हैं, वहाँ पे स्टेट्स है और वहाँ पे प्राइवेट इंडिविजुअल्स नहीं है। अब जो एरिस्टोटल यहाँ इलेबोरेट करती है कि एजुकेशन है वो क्रिएशन है एक साउंड माइंड का इन अ बॉडी साउंड बॉडी, और ये डेवलप करती है हर मैन की फैकल्टी के बारे में, माइंड के बारे में, ताकि वो सुप्रीम ग्रोथ, गुडनेस, ब्यूटी वगैरह ये सब उसे परफेक्ट हैप्पीनेस कंसिस्ट करे। अब ये इस थॉट जो थे वो सिमिलर थे प्लेटो के लिए, और उन्हें एक मॉडल सजेस्ट करा था एजुकेशन का। प्लेटो ने कि क्या इंपॉर्टेंस है अर्ली चाइल्डहुड फॉर्मेटिव एजुकेशन के लिए और कैसे ह्यूमन डेवलपमेंट होगी। तो उन्हें स्कूलिंग को 3 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया था। पहला था प्राइमरी, सेकेंडरी और हाई एजुकेशन। अब जो प्राइमरी थी उसमें 7 to 14 ईयर्स के एजेस बच्चे थे जो अटेंड करते थे, और वो कंसिस्ट करता था जिम्नास्टिक्स, राइटिंग, रीडिंग, म्यूजिक और ड्राइंग। उसके बाद जैसे 14 to 21 वो अटेंड करते थे सेकेंडरी, जिसमें स्टडीज जैसे लिटरेचर, पोइट्री, ड्रामा, म्यूजिक और डांस बहुत इंपॉर्टेंट था। और जो लास्ट के उनके 4 स्टेजेस वो स्पेंड करते थे जैसे मिलिट्री ड्रिल में, जैसे टैक्स स्ट्रैटेजीज होती है। और जो हायर एजुकेशन बिगिन होती थी वो उनकी 21 से होती थी, और वो कंटिन्यू करता था जितना वो स्टूडेंट चाहेगा। मे बी जो हायर एजुकेशन मेल के लिए होती थी ओनली एज बिकॉज एरिस्टोटल को लगता था कि फीमेल जो है वो इनकेपेबल है कॉम्प्लेक्स स्टडीज के लिए। अब हम आते हैं हमारी क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट। तो एरिस्टोटल बहुत बड़े सपोर्टर थे स्टेट कंट्रोल एजुकेशन सिस्टम में, और एरिस्टोटल व्यू करते थे एजुकेशन वाज लेस कॉम्प्रिहेंसिव एंड सिस्टमैटिक एज कंपेयर टू हिज मास्टर प्लेटो। सो ऑन द बेसिस ही एक्चुअली स्टडीड 158 कॉन्स्टिट्यूशन। अब एरिस्टोटल ने क्लासिफिकेशन दिया जो एक एक्चुअली गाइड बना एक सक्सेसिव फिलोसोफर्स के लिए, जो एक्चुअली क्लासिफाई करा गवर्नमेंट को, और उन्हें क्लासिफाई करा 2 फोल्ड बेसिस पे। एक तो है द एंड ऑफ द स्टेट, और दूसरा है द नंबर ऑफ पर्सन जो एक्चुअली शेयर करेंगे पावर, उसके बीच में उन्हें प्योर और करप्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को डिस्टिंग्विश करा है। अब हम देखते हैं ये जो टेबल है इसमें प्योर फॉर्म में और जो करप्ट फॉर्म में है, तो उसमें मोनार्की, टिरनी, एरिस्टोक्रेसी, ओलिगार्की, पॉलिटी और डेमोक्रेसी को बताया गया। अब जो यहाँ पे देखते हैं हम करप्ट फॉर्म में 3 आती हैं और प्योर फॉर्म में 2 आती हैं, और डेमोक्रेसी एक करप्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बताई गई है। अब जो अब ऑफ टेबल हम देख सकते हैं कि जो किंगडम सिग्निफाई करता है रूल ऑफ मोनार्क वो सबके लिए कॉमन गुड के लिए होता है, और ऑपरेसिव होता है, परवेसिव भी होता है। एरिस्टोटल ने आर्ग्यू करा था कि जो मोनार्की है वो बहुत प्योर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है,
और जो मोनार्क रूल्स है वो एक्चुअली बेनिफिट करता है लोगों को विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। अब जो फर्स्ट 3 है वो एक्चुअली प्योर फॉर्म्स और बाकी जो मोनार्की है वो सबसे परफेक्ट टाइप ऑफ गवर्नमेंट है। सो एरिस्टोटल की जो प्रोफाउंड सिंपैथी थी वो मोनार्की के लिए थी क्योंकि उसके रिलेशंस ज्यादा अच्छे थे मैसेडोनियन मोनार्की के साथ, और एरिस्टोटल डिस्क्राइब करता है डेमोक्रेसी एज अ वर्स्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो करप्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एरोक्रेसी की वो एक्चुअली है ओलिगार्की, और उसको एफ्लुएंट रूल करते हैं, कैरिड अवे होती है ओन बेनिफिट इंस्टेड ऑफ द होल स्टेट। अब हम देखते हैं यहाँ पे जो मेरिट और वर्च्यू की डिस्टिंक्टिव क्वालिटीज है सिलेक्ट करने में रूलर्स को एरिस्टोक्रेसी में, जो वेल्थ और बेसिस सिलेक्शन भी है ओलिगार्की में, और जो थर्ड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट स्टेट है द कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिटी। तो एरिस्टोटल का द पॉलिटी इज आल्सो लाइक अ स्टेट ऑफ द सिटीजंस एट अ लार्ज कंट्रोल ऑफ द कॉमन इंटरेस्ट। अब जो कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है वो बेसिकली कॉम्प्रोमाइज करती है टू फिलोसफी ऑफ फ्रीडम ऑफ वेल्थ है, जो एक्चुअली अटेम्प्ट करती है यूनाइट करने की फ्रीडम ऑफ पुअर, वेल्थ ऑफ रिच, without just giving on the principle of exclusive predominance। और यहाँ पे जो डीजेनरेट होता है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट वो डेमोक्रेसी है, बिकॉज उन्होंने डिफाइन करा है कि ये सिस्टम और जो रूल होता है वो पुअर ही रूल करते हैं। और इस गवर्नमेंट में यहाँ पे जो गवर्नमेंट ऑफ पुअर होती है तो सिर्फ पुअर लोग ही काम करते हैं, तो यहाँ पे डिक्टेटरशिप गवर्नमेंट 1 by 1 अपने अपने खुद के बेनिफिट के लिए करती है। और जो ओलिगार्की है वो वेल्दी होता है तो वो एक्चुअली प्रॉपर क्लास बेनिफिट देखते हैं। अब हम बात करते हैं रेवोल्यूशन की इसमें, तो एरिस्टोटल ने एक्चुअली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुए थे एग्जामिन करने में कि नोशन ऑफ रेवोल्यूशन क्या है। तो अकॉर्डिंग टू एरिस्टोटल हम देखते कोई भी चेंज जो अकर करता है प्रेजेंट सिस्टम में कॉन्स्टिट्यूशन का स्टेट में, उसका मतलब है रेवोल्यूशन। तो उन्हें लाइक थरोली एक्सप्लेन करा था कि जो थ्योरी ऑफ रेवोल्यूशन है, उन्हें एक्चुअली स्टडी में नियरली लाइक 158 कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े थे और उन्हें इम्प्लीकेशन ऑफ रेवोल्यूशन भी समझ आया था जो पॉलिटिकल सिस्टम में हो सकते हैं। अब उनके काम से हमें पॉलिटिक्स में ये दिखते डेलिब्रेट होते, क्लेन ने ऑल अबाउट रेवोल्यूशन बताते हैं, और एरिस्टोटल एक साइंटिफिक एनालिसिस भी देते हैं और एक्सपर्ट ट्रीटमेंट भी देखते हैं जो सब्जेक्ट ऑफ रेवोल्यूशन के लिए। तो उन्हें ऑफर करा एक ब्रॉड मीनिंग जो उन्हें रेवोल्यूशन को दी है, जिसका मतलब दो चीजें होती है उनके लिए कि पहले तो वो स्टेबिलिटी एक्सप्लोर करते हैं पॉलिटी में, और जो एरिस्टोटल इंस्पेक्टेड होते हैं कि कॉजेज ऑफ इंस्टेबिलिटी क्या है, चेंज और रेवोल्यूशन कैसे ये रिकमेंड कर सकते हैं रेमेडीज में ताकि अननेसेसरी रेवोल्यूशन और कंटिन्यूस चेंजेस ना हो। अब हम देखते हैं मेजर ऑफ रेवोल्यूशन में आते हैं, तो अरिस्टोटल क्लियरली इंडिकेट करता है कि काफी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजर ऑफ रेवोल्यूशन होते हैं। जैसे एक रेवोल्यूशन जो फॉर्म ऑफ चेंज होता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट का, रेवोल्यूशन पॉलिटिकल पावर के लिए भी होता है विदाउट चेंजिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, और इसलिए भी हो सकता है कि वो डायरेक्ट होता है अगेंस्ट द इंटरस्टेट सिस्टम बट अ पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन और अ सेट ऑफ पर्सन इन अ स्टेट। अब उन्होंने अपनी बुक में पॉलिटिक्स में एरिस्टोटल ने सीधे बताया था कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जो हमारे उसमें हैंडबुक में थी कि जितने भी स्टेटमेंट थे फ्रॉम टाइम टू टाइम उन्होंने एनालिटिकल और एम्पेरिकल माइंड दिया था एरिस्टोटल को, ताकि सेवरल कॉजेस बता सके रेवोल्यूशन में और सजेस्ट कर सके डिफरेंट रेमेडीज ताकि वो ओवरकम कर सके। अब जो एरिस्टोटल के एनालिसिस है वो जैसे ईविल होता है वो प्रीडोमिनेंट करता है कहते हैं ग्रीक सिटी स्टेट्स में, और वो डिफेक्ट्स बताते हैं पॉलिटिकल सिस्टम में, जो प्रैक्टिकल सजेशंस भी देते हैं ताकि वो अवॉइड कर सके कोई भी डेंजर। अब हम आते हैं कंक्लूजन पे। अब जो एरिस्टोटल के पॉलिटिकल डिस्क्रिप्शन है उन्हें एक्चुअली सर्व करा है ग्राउंड वर्क कि जो होल वेस्टर्न पॉलिटिकल ट्रेडिशन में है, उनकी जो एनसाइक्लोपीडिया थी उन्हें प्रैक्टिकली बताए थे जितने भी ब्रांचेस ऑफ ह्यूमन नॉलेज है जो डिसिमिलर थे प्लेटो के रिपब्लिक से, और एरिस्टोटल के वर्क्स तो काफी डिग्निफाइड है इन टर्म्स ऑफ थिंकिंग और एनालिसिस, जो रिफ्लेक्ट करते हैं माइंड और जो साइंटिफिक होता है इंस्टेड ऑफ अ फिलोसोफर। और वो कंसिडर करते हैं, और हम एरिस्टोटल को भी कंसिडर करते हैं फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस, बिकॉज उनने फर्स्ट पॉलिटिकल थिंकर थे कि उन्होंने सारे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को एनालाइज करा था, उनका बिहेवियर भी साइंटिफिकली और सिस्टमैटिकली, और उन्हें डिटरमाइन करा था कि मैन इज अ पॉलिटिकल एनिमल। और जो लोग ने अचीव करा था गुड लाइफ सिटीजन्स के लिए स्टेट में डेलिब्रेटिंग में जैसे इकोनॉमिक रिलेशंस में, तो ये होल्ड कर सके विद इन द सिटी स्टेट। एरिस्टोटल ने भी प्रोटेक्ट करा था इंस्टीट्यूशन और प्राइवेट प्रॉपर्टी को, जो कंडेम करता था एक्सेसिव कैपिटलिज्म, और जो नोटोरियस डिफेंड करता था इंस्टीट्यूशन ऑफ स्लेवरी। So before representing his own views, Aristotle basically converses with the various theoretical and actual models at the current times also. So in particular, we can also see that he tries to launch the extensive attacks on Plato's Republic and laws, and therefore with the critics are very unproductive and off the mark, as well as criticizing the modern philosopher and the constitution of Sparta, Crete and other state.
So Aristotle also like tries to recognize the citizenship with holding the public office and administration of justice that claims for the identity of the city that rests upon in the constitution. And in case of any revolution that is made where the citizenship and the constitution change, therefore a city's identity also changes and it cannot be upheld responsible for its actions before the revolution. So he was a great innovator in political science.